तो अब आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पे कि ब्रेन के ऊपर कि हम क्या करें कि जो ब्रेन पावर है वो हमारी बढ़े। और जब ब्रेन पावर बढ़े तो उसके साथ साथ हमारी सारी जो लाइफ की फंक्शनिंग है वो भी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। हम ब्रेन पावर को क्यों बढ़ाएं? क्योंकि वो अगर हम ब्रेन को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सारी ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ेगी। तो ब्रेन के अंदर ये जो सोच है, थिंकिंग है, ये किधर है? थॉट जो है वो किधर है? सोच वो भी हमारे ब्रेन में है और माइंड में भी है, दोनों चीजें हैं। ब्रेन के बहुत सारे, मसलन हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि ब्रेन के अंदर जो हमारी सारी थिंकिंग का जो एक तरीका है वो हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं या सुनते हैं या जब खाते हैं गस्टेटरी तो वो टेस्ट करते हैं। तो वो सारे जो फंक्शंस हैं वो ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के अंदर बाकायदा, अब साइंटिफिक फैक्ट के मुताबिक वो बाकायदा ब्रेन के डिफरेंट हिस्से हैं जहाँ पर कि वो फंक्शनिंग हो रही होती है। और वो साइंटिफिकली अब मेजर किया जा सकता है कि ये चीज़ हो रही है। और जिस भी सेंस को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का वो हिस्सा, ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है। तो जिस थॉट फॉर्म को, अब थॉट क्या है? थॉट है मजमुआ इन सारी पांचों सेंसेस के अंदर से बनती हैं। इमोशंस क्या है? वो भी इन सारी पांचों सेंसेस से हमारे इमोशंस बनते हैं। तो वो उनकी भी अपनी अपनी जगह पे है। अब जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हाँ, अब अगर हम ब्रेन को कंट्रोल करने देंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल से क्या मतलब है? हाँ, उसमें हम ये कहते हैं कि जो ब्रेन है वो एक नॉटी इंस्ट्रूमेंट है। नॉटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि ब्रेन आमतौर पे जितनी हम बतौर इंसान हम गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं और गलतियां करते हैं जहाँ जहाँ पर भी, तो वहाँ पर उसके पीछे हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है वो, और वो हमें उकसा रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि अच्छा यूं करो, तो वो चीज। मगर जो माइंड होता है वो हमें सही रास्ते के दिखाता है। वो हमें बताता है कि यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। वो हमें एक सही रास्ते की तरफ डायरेक्शन दे पा रहा होता है। मगर जो ब्रेन है वो बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि किसी ने एक गलत हरकत की तो हम कहते हैं उसने माइंडलेसली एक चीज की, माइंडलेसली यानी कि अपना जो माइंड था वो नहीं इस्तेमाल किया, ब्रेन इस्तेमाल कर लिया। तो इस वजह से हर नॉटी काम जो हमें ब्रेन करा रहा होता है, लेकिन हर अच्छा काम हमारा माइंड करा रहा होता है। तो अब ब्रेन की फंक्शनिंग अगर हमने इम्प्रूव करनी हो तो हम किस चीज को अहमियत देंगे अपने अंदर? जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, जो हमारी एनालिटिकल थिंकिंग है, जो एक चीज को करने के लिए एक प्रोसीजरल तरीके से प्लान करके हम एक चीज सोचते हैं और एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और उसका जायजा लेते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है। ये सारी ब्रेन के अंदर होती है, ये ब्रेन के फंक्शन होते हैं। इसी तरह हमारे जो ये पांचों सेंसेस हैं, ये सारे जो सेंसेस हैं इनके सारे सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर होते हैं। इसी तरह एमिगडाला हमारे अंदर ब्रेन में अंदर होता है एक हिस्सा जो कि इमोशनल सेंटर होता है। तो ब्रेन का जितना इमोशनल सेंटर है, जितने इमोशंस होते हैं वो सारे एमिगडाला के अंदर होते हैं। और वो इमोशनल, हम जो भी काम करते हैं इमोशंस के साथ, तो हमारा ब्रेन के वजह से हम कर रहे होते हैं। अब होता ही है कि जिस हिस्से ब्रेन को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिए, वही डेवलप होता चला जाएगा। अब अगर हम हैबिट किस तरह फॉर्म होती है? हैबिट, आदत। हम बहुत सारी चीजें अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम आदत के मुताबिक चल रहे होते हैं। सुबह इस वक्त उठे, ये आदत हुई, कपड़े इस तरह पहने एक आदत के मुताबिक,
इस तरह हमने टूथब्रश किया, इस तरह हम खाने के लिए बैठे, इस तरह हमने कमरे में गए, ये किया वो किया पहले ये। तो सारा दिन रात हम एक ख़ास आदत, इस तरह हम सोए, इस तरह जागे, तो इस तरह फिर सोच की भी आदत पड़ जाती है, काम करने की भी आदत पड़ जाती है। वो सारी जो आदतें हैं वो ब्रेन के अंदर स्टोर होती चली जाती है और वो ब्रेन फंक्शन उसी तरीके से फिर करता है जिस तरीके से हमने उसको आदत के तौर पे डाल दिया। तो कोई चीज़ जब हम एक दफ़ा से ज़्यादा रिपीट करते हैं तो वो फिर हमारी आदत बनती चली जाती है और वो पक्की आदत हो जाती है। बिल्कुल सोचों का भी यही हाल होता है। अगर हम सोचने के एक अंदाज को बार बार सोचें तो हमारी पक्की आदत हो जाएगी थोड़े अरसे के बाद बिल्कुल उसी तरह सोचने के लिए। चाहे वो सोच हम अपने बारे में सोच रहे हों, किसी के बारे में सोच रहे हों, काम के बारे में सोच रहे हों, सियासत के बारे में सोच रहे हों, सेहत के, जो भी सोच की हमारी आदत है वो फिर उसी तरह बढ़ती चली जाती है। तो उसको चेंज करने के लिए या बेहतरी लाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है और वो होता है अवेयरनेस। अब ब्रेन का एक तो फंक्शन ये हो गया कि उसने थिंकिंग को लॉजिकल बनाना है, ब्रेन ने एनालिटिकल बनाना है। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब है कि आप उसको देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा होना चाहिए, और अपने अंदर एक ऐसा फॉर्म थिंकिंग का डेवलप करते हैं कि लॉजिकली कंक्लूजन तक आप पहुंचते हैं कि ए से जेड तक यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, और वो प्रोसीजरल एक सेटअप बनाते हैं आप उस थिंकिंग के जरिए। ठीक है, तो वो भी ब्रेन का फंक्शन है सारा, और वो हमें आनी चाहिए किसी भी कारोबार करने, कोई अच्छा काम करने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन कि हम मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। चाहे किसी की कितनी भी अच्छी मेमोरी हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से करेंगे तो इनके अंदर और बेहतरी आती चली जाएगी। इसमें मसलन ये है कि एसोसिएशन, जब हमने कोई चीज़ें याद करनी हो तो हम अगर एसोसिएशन उनको करें, उन चीज़ों को, चाहे हमने कुछ भी पढ़ना लिखना हो, अगर आप एसोसिएट करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके भी फंक्शन होता है, ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि हमने देखना है, हमारी सेंस है, हम बाहर से चीज़ों को देखते हैं और अंदर इंटरनली भी देखते हैं। हम सुनते हैं, ये भी एक फंक्शन है। हम महसूस करते हैं, टच एंड फील, ये भी एक हमारी सेंस है। हम सूंघते हैं, ये भी एक सेंस है। और हम टेस्ट करते हैं, ये 5 सेंसेस हमारे। तो हम 6 सेंस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। अभी सपोजिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा हैप्पी। ये लफ्ज, इसमें कितने लेटर्स हैं? 3 और 2 5 लेटर्स हैं। ये 15, 16, 18, 20, 22, 27 लेटर्स का भी एक लफ्ज हो सकता है। अब अगर इसको हमने याद करना हो, किसी एक लफ्ज को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस लफ्ज को याद कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम अपने ब्रेन के फंक्शन को बढ़ा रहे हैं और उसको तक़वियत दे रहे हैं, और उसको जब अंदर से हम बार बार उसके ऊपर काम करते हैं तो हमारी मेमोरी बेहतर होती है, क्योंकि हम अपनी सेंसेस को बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो आप अभी इसको अपने माइंड में सोचें और माइंड में लिखा हुआ देखें अपने। ऐसे देखें कि एक वाइट बोर्ड है, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसी पर जाए HAPPY। अब इसको देखे बगैर आप मुझे बताएं, कोई देख तो नहीं रहा इसको, आप मुझे बताएं कि उल्टा पढ़ें तो क्या स्पेलिंग है इसके उल्टा पढ़ने के, जल्दी से बताएं। YPPAH। तो ये तो आपने इतना सिंपल लफ्ज़ था, फौरन पढ़ लिया।
तो इसका मतलब आप लोगों की इमेजिन कैसे पढ़ा आपने, जो विजुअल सेंस थी, देखने वाली सेंस, उसको देखा, उसमें देखा YPPAH, आपको नजर आ रहा था वो लफ्ज, और जब वो नजर आ रहा था तो आपकी मेमोरी ने उसको फौरन बताया कि ये वो है। अब आप में से मुझे कोई एक ऐसा लफ्ज बताएं जिसमें ज्यादा लेटर्स हों, कोई बताए है जी? मोटिवेशन, मोटिवेशन। अब आप लोग जरा तैयार हो जाएं इसको करने के लिए। मोटिवेशन पढ़ लिया सबने? अब अपने माइंड में आप इस लफ्ज को देखें लिखा हुआ, इमेजिन करें, अपनी सेंस, विजुअल सेंस इंटरनली इस्तेमाल करें। वी आर गोइंग टू improve a function of the brain by using it more। याद रखिए, जितनी और जिस सेंस को हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो सेंस बढ़ती चली जाएगी और हम जीनियस लेवल तक जा सकते हैं, अपने आप को ले जा सकते हैं। तो अब आपने, कुछ लोग आप में से ऊपर ऊपर देखना है, इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है, याद करें। अब आप, मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप देख ना सकें, देख तो नहीं रहा कोई। अब आप इसको फॉरवर्ड स्पेलिंग पढ़ें। हो, उल्टा पढ़ें। उल्टा आप में से कौन है वॉलंटियर पढ़ने के लिए? वॉलंटियर आप पढ़िए। NOIT, ए बीच में से भूल गए थे आप, और VITOM वो ठीक था आपका। कोई और वॉलंटियर जो पूरा पढ़ सके? AVI छोड़ दिया, TOM पढ़ा आपने। तब आपने देखा आप उल्टा उस वक्त तक नहीं पूरा पढ़ सकते जब तक इसको आप विजुअली इंटरनली देखेंगे नहीं। अब आप आंखें बंद करें एक दफा और इसको देखें, एंड मैं बोलता जाता हूं, आप आंखें बंद के साथ इसको देखें, लिखा हुआ अपने माइंड में, अपने ब्रेन में देखें लिखा हुआ NOITAVITOM। एक दफा फिर NOITAVITOM। देखा लिखा हुआ अपने माइंड में? ओके, अब कोई वॉलंटियर बताए मुझे। नहीं देखा। अब हम इसको आसान बनाते हैं। इसी चीज को हम ब्रेन को फंक्शनिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं चंकिंग। कुछ थोड़ी नई चीजें आज आपके सामने आ रही हैं, कोई बात नहीं, सीखते जाए। चंकिंग, MOTI मोटी, VAT वैट, और ION। अब क्या हुआ, हमने इसको चंक कर दिया, इसके 3 हिस्से। चंक का मतलब है कोई बड़ी चीज है, उसको हम चंक डाउन करके छोटा बनाते हैं और उसको आसान बना देते हैं अपने। तो कोई भी बड़ा काम हो वो हमारे ऊपर ओवरवेल्म हो जाता है। तो हमने उसको उसी तरह नहीं करना होता, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बनाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं, तो फिर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चंक डाउन एनी बिग टास्क
on daily basis or anywhere at all, anything that you want to do. तो अब आप जब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो NOI को अलग पढ़ेंगे, VAT को TAV अलग पढ़ेंगे, NOI TAV and ITOM, NOI TAV ITOM, ठीक है, मुझे भी याद हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये हमने उल्टा जब हम पढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं तो 3 हिस्सों में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक तो हमने ये एक्सरसाइज की ब्रेन की मेमोरी, जो आप डेली लाइफ में भी कहीं कोई बिलबोर्ड है, कहीं आप कोई लफ्ज देखते हैं, तो अपनी विजुअल सेंस को बढ़ाने के लिए, कहीं भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसको पढ़ें और फिर उसको उल्टा पढ़ें, फिर पढ़ें और फिर उसको उल्टा पढ़ें। तो आपकी विजुअल सेंस ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहेगी और आपकी मेमोरी शार्प से शार्प होती चली जाएगी, क्योंकि जो विजुअल सेंस है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक निहायत मौसर और इम्पोर्टेंट सेंस है फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवन हु वांट्स टू लर्न क्विकर, फास्टर एंड रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे हैव टू हैव अ गुड विजुअल सेंस। राइट सो फार? अब हम इसका एक और एस्पेक्ट देखते हैं और वह है एसोसिएशन। तो रैंडम, रेडी है एसोसिएशन के लिए? ऑलराइट, लेट्स सी। फिर मैं आप में से कोई एक वॉलंटियर कहूंगा कि आप आ जाए, तो whoever comes as a volunteer is okay. Now be ready. I'm going to speak 7 random words. Tree, road, river, grass, house, eagle, man. ओके, आप में से कौन है वॉलंटियर जो 7 वर्ड्स रिपीट करे? बताइए। चले देखते हैं 7 वर्ड्स रिपीट करें। बताएं, रिपीट करें। उसी ऑर्डर में होने चाहिए। नहीं ऑर्डर नहीं, वो जो है ना उसका शर्त ही यही है कि उसी ऑर्डर में हो। नहीं आप बनाए चले, बोले। गलत ऑर्डर, सेम ऑर्डर। यस, ट्री, हाँ, रोड, हाउस ना, गलत हो गया। ट्री, रोड, हाउस, ग्रास, ईगल। ट्री रोड नहीं, एक बीच में मिस हो गया। ओके, अब हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी, स्टोरी। आपने क्या करना है कि कोई भी जो लफ्ज हो, एक ही दफा भी हम बात करेंगे और फिर हम देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है। कोई भी जो लफ्ज है उसको विजुअल सेंस में, साउंड में और फीलिंग में ले आए और उसको एज इट इज, जैसे ट्री होता है वैसे ना देखें। जब मैं कहूँ ट्री तो आप उसको एक येलो रंग का, गोल्डन रंग के इसके लीव्स और उसकी ब्रांचेस ब्लू रंग की, या इस तरह अनयूजुअल किस्म का ट्री। जब मैं कहूँ रोड तो आप देखें कि वो ब्लैक रोड नहीं है, बल्कि शायद सिल्वर रंग की है या ग्रीन रंग की है और शाइनिंग ग्रीन और समथिंग। तो डू समथिंग डिफरेंट एंटायरली। तो अभी हम ये कहानी करते हैं। एक, देयर वाज अ ट्री, गिव अ डिफरेंट absolutely imagination to the tree, and it was besides a road, next to the road, and the road was leading to a river, fast flowing river. Give different color to the water. It can be yellow, green, or anything, or the fish flying in the river and all that. To the river, and next to the river was a big plot of green grass. And that green grass plot was that of a big, beautiful house. So make it a beautiful house. And as you look up, you find an eagle flying over that house. It was a very good scene. And a man who possessed all that was standing next to the house. Now this is the story. Can you repeat those 7 words now? Yeah.
Who can do that? Yes? The man who had all this, right? So this is a story. You heard it once. Now, if I say a word, can you say a word after this and below this, before this? Road. What is the word after this? Before that? See this? आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. हम कहते हैं कि रट्टा लगाओ, भूल जाता है, फिर हम उसमें गलतियां करते हैं. Why? Use your senses of association. Association means you can exaggerate, you can make it interesting. When you are reading a paragraph, you can associate that whole paragraph into something beautiful. That is called visual reading. And you will remember the whole book or chapters by using your brain more, by getting involved into it. And you can always recall it later on easily. The recall will be very easy later on. You see, that's how we use our brain. These are functions of the brain. No need to brutalize or do any such things. Use your brain more. One more memory exercise. You missed too many beautiful exercises. Anyway, one more memory exercise, which if you do regularly at night before going to sleep, your memory will become super memory, supercharged memory all the time. And you can, if you do it regularly, you can go into like a genius level. You can touch that. And which is very essential for all of us, right? And that exercise is that before going to sleep at night, just sit on a chair and close your eyes. And remember one most important thing of the day. Only one most important thing of the day. What does it mean? Which means sitting on a chair before going to sleep and remembering one most important thing of the day. How? Let's say today it's night time. Before I'm going to sleep, I'm sitting on a chair and I remember one most important thing of the day. Let's say I'm sitting in my office and someone has come to visit me. And now I'm recalling, now I've closed my eyes. Within 10 minutes, I'm going to recall most important thing of the day. Let's say that was an important person for me and we had to talk something very important. And I am now sitting, I'm recalling the whole system. What I am recalling in detail in the next 10 minutes, I'm recalling everything that happened in this 10 minutes. Although the meeting lasted for 1 hour, but I'm going to recall the whole thing in this 10 minutes. And what I'm recalling is, what did we talk? Why did we talk all this? How did the talk go on? What I said, recalling the whole thing, what he said, what I said, what he said, and how were the whole things progressing, everything. What clothes I was putting on, what clothes he was putting on, how was his hair, his glasses, his dress and all. What was the temperature in the room? Were there any outside noises or not? Did any phone ring up, mine or his? And during that tea and or coffee and samosa, how was the coffee tasting? And how was the taste of the samosa? Hot, nice samosa. Well, very, very minute detail, the minutest detail that you can recall, better it is. Especially the whole of the conversation which took place in 1 hour.
If we can do that, then our recall system of the memory, this improves many-fold every single evening. Because in that, you are not only visualizing, you are listening and you're feeling things as well. So we are using all the three senses of the brain. And that's how we strengthen our senses. And the more we do such exercise, our brain, you see, is exercised and those senses are strengthened and we become very good in memory or memorizing anything that we do. Because it's the recall. What is memory? It's the recall. And whenever you are reading a book, I sometimes make these children practice visual reading. You strengthen the visual sense of imagination when you're reading something. Make stories out of it, just as we did this in these 7 words. Even now, even tomorrow, even after 1 month, I ask you, what are those 7 words? Will you remember those 7 words? Yes, you will. Why? अगर रट्टा लगाया हुआ तो you cannot remember the same order. But now you will remember the same order. It's so simple how to use. Similarly, when the children, I used to have been teaching these whiz kids for many years, and I used to teach such things to the children. And their grades, they would go from here to that level every time in every summer vacations. And the schools were surprised as to what happened to these children who were having average grades, and now they have moved into above average grades. Just use of the brain, more use of your brain. Okay. Another few things that we can improve our, this is the lifestyle, like sleep. Sleep, the science says 6 to 8 hours of deep, refreshing sleep, undisturbed, deep, refreshing sleep, 6 to 8 hours, you should ensure for yourself. Reduce the screen time on the phone or on the TV, because it is just entertaining, no doubt, but for the brain portion is not so healthy, because the whole thing is changing rapidly. The lights, the sound, the scenes, and everything. And the brain then gets used to thinking in such rapidly changing forms. So you can't focus. You see, if you give these phones to the children, after some time you find that they cannot focus properly on subjects, because the brain is used to getting one after the other, especially those reels, and then you can't get over it. And you're so much involved into it. Why do we get involved into screen? Because it is very entertaining, very enjoyable. And which part of the brain we are feeding? The amygdala part, where the emotions are the center, and that give the pleasure center. The pleasure center is activated. The more we use, that becomes very strong. And the thinking part, the prefrontal cortex, that shrinks, and the emotional center becomes very strong. And then we say that the brain has started controlling us. Of course, it will control you. When you strengthen that part of the brain, and you will become emotional, and you won't be able to stop yourself. This is what addiction is, all about it. So, doing exercise, morning or evening or night, before you sleep, either you go to gym or you play some games or do some walk. And walk, I would say, do power walk. There are certain breathing systems. We involve a breathing system with the walk, and then it becomes a powerful walk. It helps your digestive system. It gives more oxygen to your brain, and in a short time, we get more benefits from the exercise. And they take a lot of water and proper diet. These days we are having a lot of outside food. The food panda is very active. They don't get time to deliver. And those outside food, we don't know really how they are made and what are the ingredients in that.
and may not be completely healthy for the health. So it's better to have home cooked food, and occasionally, yes, of course, why not? You need entertainment. But otherwise, more of vegetables, fruits, salads, and less of fats is a good food. And instead of wheat, go for like multigrain kind of a atta. So that is also more healthy because there is less gluten in that. And if the brain is unhappy with stress, tension, and our beliefs, negative beliefs, and there are so many things happening, and even thinking is affected, and a foggy brain, what should we do? Then we must work on those issues, have a healthy brain, and OMW is a great instrument to help us in that. Meditation, mindful meditation, is wonderful for that. Even exercise is excellent for clearing, having a healthy brain. So today we will do mindful meditation. You must have heard the word mindful a number of times, but have you experienced mindful meditation? Maybe not. So we will today do mindful meditation, and then let me know your feedback after this. And limiting beliefs are those which stop us from doing something good, progressing in life, and we stop ourselves and moving ahead in life. So those are the limiting beliefs. Otherwise, actually, we as human beings, our brain capacity is actually unlimited. We can go to any other limits. And brain gym, I have written here brain gym. So have you heard this word, brain gym? You go to gymnastics, you go to gym, a number of people, young people. Have you heard of brain gym? No. Right. I'll just give you a few exercises, very few, just a touch of brain gym. Otherwise, there are multiple, a huge number of exercises of brain gym. Why do we do it? This brain gym. Why do we do it? And there is a left brain here, and there is a right brain. And you can, if you see the anatomy of the brain, you can see the brain. It's left and right. Is the brain of males and females the same? What do you think? Left and right brains of the males and the females, is it the same? No? No. What Fatma is saying is that she says we can do multitasking more, whereas men cannot. Is it what you're saying? That is what That's what she's saying. And men cannot. And the second point she said was? That we have to be more emotionally involved. And women are more emotionally involved, whereas men are not. They're more matter of fact, men. And 2 plus 2, but they look at things differently. Is it so? Men, is it so? You people can't do multitasking? What is wrong with you? क्या है आपको बताए ना ओके क्या कह रहे हैं बिल्ट इन होती है बिल्ट इन से क्या मतलब बाय नेचर से क्या मतलब yes she is right the science says I read an article in Times magazine, and then I researched on this many years ago. The science says that the left brain and right brain have different functions. The left brain is logical, 2 plus 2 is 4, and the right brain is more of emotional, and it looks at the whole picture at one go, the right brain.
The left brain looks at anything in detail, 1, 2, 3, and cannot look at the whole picture in one go. Let's say the example can be that a person is standing and there is a train coming, and the person is about 50 feet away from the train, just 50 feet away. The train comes and the train is passing fast, all the bogies and the engine and the just going past. So he can hardly count the number of bogies, hardly. And all he knows is that noise, that dust, and the fast moving of the train and the pressure of the air and all that. This is the left brain. The left brain. The right brain, what it does is that it flies above, goes up 500 feet, 200 feet above. And he looks at the train coming from above. And he sees, oh, the train is coming, it's taking a curve, now it's going this is the speed, and that's how the bogies are. The engine is of like this, the bogies are this is the color, that many number of bogies, that long is the train. That is the overall picture. So the right brain takes the overall picture of anything. The left brain goes into logical, counting, methodical, exact. Out of these two, this is a very important question now. Out of these two, who is the boss? Left. Left? Why? How? Because who is the boss? Naturally. ये जो मेल होते हैं ना, इनको कुछ समझ नहीं आती. ये जो हमारा राइट ब्रेन है, इट कैन नॉट think. The way it is programmed and that's all. The thinking part is in the left brain. So the left brain becomes the boss. Because with the help of the left brain, you can always program and reprogram the right brain. You can keep programming and reprogramming and make your right brain function differently. Somebody has OCD, obsessive compulsive disorder, of washing hands all the time, or maybe for hours. So the right brain has programmed that person that unless you wash your hands 100 times, you will be unparked, you will not be parked, you will be unclean. Okay? So the right brain has been programmed, and so he's functioning like this. So the right brain doesn't think. Whatever way you program it, it just moves on like this. So the thinking part is in the left brain. Now what happens in the case of male and females? Brain part, brain. And the communication between left and right brain is more naturally. Allah has made it so. In the case of women, and not in the case of men. When I am driving a car, many times it happens, and my wife is sitting next to me, and I'm going to take a wrong turn because I'm involved in my own thoughts sometimes, and she's the one who immediately tells me, don't take this turn, go this way. And similarly, conversation or in daily life, I'm sometimes surprised that she just tells me, okay, do this, do this. How does she know? They have more intuitive sense. They are more emotionally involved, naturally. And this happens with all the women's side. And they can do multitasking more. Why? Because there is more communication between left and right brain. There is more communication. This science has proved. All right? जी. Sure. एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि मैन भी जी, उसमें ऐसा है
कि ये एक हम जनरल पैटर्न साइंस ने बनाया है, हमने नहीं किया ये चीज़। एंड दे हैव देयर वेज। अब तो साइंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। अब तो वो ब्रेन स्कैनिंग कर लेते हैं आपके एक एक थॉट को, इमोशन को, किसी भी सेंस को, ब्रेन किस हिस्से से कहाँ कितना डेवलप हुआ है, क्या है, और सब कुछ उनको पता चल जाता है। और द वाइल यू आर थिंकिंग, वाइल यू आर इन इमोशनल स्टेट, वो उसी वक्त आपको हर चीज़ सामने बना देते हैं। डेनियल कोलमैन एक वो है, डेनियल पर्सन, उसने तकरीबन 3 लाख ब्रेन स्कैन अभी तक कर चुका है। एंड मैं कई दफ़ा उसकी मैं वो ब्रेन स्कैन्स की साइट में विजिट करता हूँ, तो आई एम अमेज्ड। वो साइकेट्रिस्ट है, ही डज नॉट गिव एनी मेडिसिन टू एनीबडी अनलेस फर्स्ट ही डज ब्रेन स्कैनिंग, और फिर वो मेडिसिन देता है, और फिर जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है वो उसके हिसाब से मेडिसिन को टेलर करता है, एंड देन ही gives, so she takes a brain scan, and then people get all right very soon, because that is the exact medicine the person needs because after the brain scanning. But here we do not have those facilities. We do not have that technology. So we just, by guessing, okay, so take this, you have these symptoms, we guess and give medicine. That's it. But what you're saying, this part of communication between women and men has been proved scientifically, and there is no doubt about it. I'm 100%. There is no doubt about it. When I was looking at TV, and there is news going on, and there's some news which I can hear, and there are some captions in the TV. If I read the captions, I cannot listen to the news. You can try it. If I listen to the news intently, with concentration, I cannot read the captions. No way I can't do it. So our brain can think of one thing at a time. One thing at a time. Right? So that is the way our brain functions. So we should realize that we should focus on whatever we are doing at any point in time. And that is also called mindfulness. When we are mindful of what we are doing, then we can focus on all that. Understand? Any other questions so far? Okay, I was telling you, yes? I have a small question if you have time for it. Yeah, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रील्स की कंजम्पशन की वजह से हमें रैपिड इंफॉर्मेशन की बहुत आदत हो गई है, जिस वजह से फोकस करना मुश्किल हो गई। ये मुझे लगता है कि जो ADHD रिसेंटली बहुत बोला था प्रिस्क्राइब बहुत ज्यादा, ये उसी की शायद कंसेप्ट है, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? उसको ऐसा है कि ADHD देयर इज अ थिंग, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली अमेरिका में। आई वाज रीडिंग इट द अदर डे, और वो उसी जो साइकेट्रिस्ट है डेनियल, उसकी ये फाइंडिंग्स हैं कि ADHD के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसके पीछे ये जो है ना स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना है, बिकॉज इट्स रैपिडली मूविंग और ब्रेन को वही आदत पड़ रही है और उससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है। So this is one thing. Another thing is OMW. We will do a OMW. OMW is one thing which can help you to improve your brain functioning and mind functioning and relate it with your whole body, with your habits, and program you for the future problems if you want to overcome them. Something like that. Okay, I was telling you about brain gym. I'm quite surprised that none of you have you heard of brain gym? In passing. No, brain gym. आपके क्वेश्चन की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। And I started talking about left and right brain. But brain gym is related with left and right brain. Left brain and right brain. The left brain, the medical science says, controls the right side of the body. Our body is exactly divided from the center. And two parts have been put together. These meridians, also you see this exactly center, the central meridian, and it's two parts, 6 meridians here and 6 on the other side. Chinese discovered this 4,600 years ago, and now our medical science has confirmed all this. So when the body is divided exactly from the center,
the left brain controls when there is a fallish, somebody is having a fallish disease. At that time, if the right side fallish, their left brain has been affected. If there is the left side fallish, that means that the right side of the brain has been affected. That's how our body is made. So brain gym means involving both the sides at the same time and using our whole brain. It's something wonderful. It enhances the functions of the whole brain, not just left to right. And that means the whole brain gets benefit from this brain. So I will just tell you a few very simple exercises. You can do those exercises with me if you like to. There is no harm. First exercise is that if I do this, so what I'm doing is I'm raising my left leg and touching with my right arm. So left and right. So both the functions of the brain are there multiple times. Multiple times. You can do it 10, 15, 20, 25 times. If you do it daily, let's say 15 times, this function is so right. And the other is if you put like this, like put your hand from behind and like this. So with this left hand and this right arm, I'm touching like this or then doing like this. So I'm again using both sides of the brain. Right? Another very good exercise is, have you heard of urology? Urology? No? क्या देखते हैं इंटरनेट पे? सारा दिन रील्स देखते रहते हैं बस. कोई ऐसी चीजें भी देख लिया कर. अच्छा, ईयरोलॉजी हमें बताती है, ये जो ईयर होता है ना हमारा, ये इसके अंदर पूरी बॉडी होती है. मैं आपको समटाइम्स आई विल शो यू अ स्लाइड ऑन दिस और अ पिक्चर ऑन दिस. द ईयर हैज होल बॉडी, राइट? द ब्रेन पार्ट इज हियर एट द लो, नीचे होता है, और जो लेग्स होती हैं वो ऊपर होती है. उल्टा होता है ईयर के अंदर, पूरी बॉडी होती है. और बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं दुनिया में जो सिर्फ ईयर से इलाज करते हैं. दे स्पेशलाइज इन ईयरोलॉजी थेरेपी एंड दे डू एंटायर थेरेपी फॉर एनी प्रॉब्लम इन द बॉडी, इवन इन द ब्रेन, through the ears and no other way. And they are quite successful. I have read about them and I have some data about it, and I have seen which parts of the ear conform to which part of the body. Now, कान बड़े. तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी बच्चे के कान खींचना शुरू कर दें और उसके कान बड़े करें ताकि उसके अंदर वो ज़्यादा चीज़ है, ऐसे नहीं. और ये अच्छी बात नहीं होती जब टीचर बच्चे को होमवर्क ना करके आए तो कान मरोड़ना शुरू कर देते हैं. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ हेल्दी थिंग टू डू, बिकॉज उससे और भी उसके ऊपर डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं. तो ईयरोलॉजी की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका हम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के साथ एक फंक्शन बनता है. इसका जो लोअर पार्ट है, ईयर लोब, ईयर, दिस इज द ब्रेन. इफ वी डू दिस लाइक दिस, ऐसे ऐसे करेंगे अगर हम को ऐसे ऐसे, तो वी आर स्टिमुलेटिंग आवर ब्रेन. ठीक है? तो हम यूं करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों इकट्ठे करते हैं. तो हम दोनों को यूं पकड़ लेते हैं और इसको हम ये करते हैं. सॉरी, आई एम सॉरी, कानों को हाथ लगाते. तोबा तोबा तोबा, ऐसे नहीं, तोबा तोबा तोबा, ऐसे, ये ऐसे. और हम नीज को ऐसे बेंड करते हैं, ये, और ऐसे हम गिन रहे हैं हम. 1, तोबा तोबा तोबा, 2, 3, 4, 5, something like that. You can count for 10, 15, 20 times and do those exercises also which I told you about brain gym. Very simple, this one and this one, very simple exercises. Do this. You can do it, make it a routine after you take bath, after you finished with your bathing in the bathroom. Do these exercises and then come out and rub yourself with towel, then come out and put on your clothes. So your body will be warm, and these exercises will really help you
to improve the functioning of the whole brain, this whole brain functioning. Okay. So, any questions so far? There is one more. One more. Ji? Acupressure is different. Acupressure is different. There are different acupressures in our hands. There are three places which have acupressure points in our body. One is the ears, other is the hands, the complete body, and other is the soles of the feet. Complete body. And there are therapists abroad who treat people. A client came to me from England and she had some problems. She was treating all her patients through acupressures on the hands. And there are some people who treat with acupressure on the soles of the feet. And they're quite successful and it works. And that's why they are popular in the other countries. लोअर पार्ट जो है वो ब्रेन को कंट्रोल करता है। लोअर पार्ट, हियर इज द ब्रेन। तो लेडीज को ईयर यूज करती हैं तो वो ब्रेन को कंट्रोल करती है। नहीं, वो तो वैसे पहनती है ना, दैट मेक्स देम ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल, दैट इज ओके। जी, टंग पार्ट है, टंग का, हाँ, एवरीथिंग, हाँ, यहाँ पे सारे पार्ट, सारे हिस्से होते हैं ब्रेन के अंदर। ईयर में बॉडी के सारे हिस्से होते हैं। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगा किसी वक्त। Both are very similar to one another. The critical is you are asking questions and looking at things critically to reach to the bottom of the whole issue. And और दूसरा आपने कौन सा कहा था? Analytical thinking is again logically analyzing. You are analyzing things more and not so much of critical. So, but at the end, both join together. There's one more way also that we can use our brain more by the use of our hands. Our hands, our fingertips are nerve endings of the brain. The nerves they end here on the tips of the fingers. So these are deeply connected, all these tips, with the functioning of the brain. And there are acupuncture points in the hands also, like this place here. This is the acupuncture point of the ear, right? And there's some other also, which I'm not going into those details, but this is ear, both sides here. The thumb represents the, brain. Thumb represents the brain. When we press it here, all these places, we are stimulating our brain. This portion of the thumb, this represents neck. There's some issues in the neck, and if somebody is coughing more and more and can't stop himself, better do this, come on, do this. The cough will get over, something like that. It is throat, this portion, right? So that's how our body is made by God like this. So there are certain things which if we do with our hands, like I am doing, come on, do it, do this, yeah. What we are doing is, we are stimulating all the nerve endings of the fingers and which are directly connected with our brain. So we are stimulating both parts of our brain, left and right, both. This is very helpful. This increases your memory, sharpness, clear thinking, logical thinking, analytical thinking. And if you continue doing it, it'll give you a big benefit by just doing this and something like that, right? Okay. The other way is that if we do this, thumb and press this, thumb and press this, thumb ke saath. Do this. So what we are doing is here that we are strengthening our ears
And ear is a whole body in it. And we are using our thumb, the brain part, also exercising it. You see this? And then further to it is like this. Pura khol denge, fingers press it. Do it like this, right? And if there is somebody is having stress or tension or something, and if you put your fingers like this and do like this, kadaka nikal aata hai na kisi waqt, and you do this like this. So it gives you a little soothness and stress release का आपको ऐसा थोड़ा सा एहसास होता है. वो आपको एहसास किसी में से ऐसे ऐसे करने से, ऐसे 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 करने से. All right. So, and the other one, again with the fingertips, is doing this. And the other one is doing this. So these are some of those exercises I thought I will share with you for purpose of this, your brain health. And regarding, there is a complete system of in yoga of improving brain health. But we can't do yoga here. Otherwise, there are a number of asanas, that means exercises, in yoga as well, which really help the brain a lot. But I can share, and there is about 5-6 kind of breaths, saans lena, that if we do such breath work, then we can really help our brain. And I can share with you one such breath work. Should I share with you one breath work? Just one breath work today. So why I say that this breath work, which we are going to do now, is important for the brain. When we breathe from our left nostril, the oxygen goes to the right side of the brain. So brain food, one of the most important food for the brain is oxygen. And when we oxygenate the brain deliberately through our breath, then we really strengthen our brain functioning. And then we do it alternatively, and the whole brain becomes fully oxygenated, and it functions much better then.